a periodic motion of special type in which the particle moves to and fro To and fro, about a like about a fixed point called as mean mean position position, mean position. of particle. Under the action of a restoring force, which is directly proportional to the displacement from the mean position. Yes. हाँ, जो फिर मीन ये पोजीशन होती है वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ होती है। जहाँ पर पेंडुलम ऐसे रहता है ना। इक्विलिब्रियम में। ठीक है जी, तो बेसिक डेफिनेशन तो पता है तुम्हें। सो दो थैंक्स मोशन टू। होते हैं, एक होता है पीरियोडिक। अच्छा, ओके सो ऑसिलेटरी। नहीं, ऐसा ऑसिलेटरी नहीं होता वो, सॉरी नो नो, सॉरी। इट हैज अ पीरियड, दैट्स ऑल। ये जैसे अर्थ की रेवोल्यूशन अराउंड द हाँ, सन। द देयर इज अ फिक्स टाइम इंटरवल, फिक्स टाइम interval. Okay, you can see if you go from your house to a shop and then you come back, सो सिंपल सी right? बात है, अर्थ की रेवोल्यूशन अराउंड द सन। It is not oscillatory by any इट इज chance. पीरियोडिक। It is periodic. So per it is repetitive, but it is not oscillatory. Okay. ऑसिलेटरी एक पीरियोडिक मोशन हो, हाँ पीरियोडिक मोशन होता हाँ, टू एंड फ्रो नहीं है, टाइम है। हाँ, पीरियड होता है इसके पास। इट हैज अ ये टाइम पीरियड। ओके, ओके। it so repeat it repeat itself every time period. Repetition is no problem, and there is a frequency also associated with it. क्योंकि अच्छा। रिपीट है तो फ्रीक्वेंसी होगी, राइट? सो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेपिटेशन इज 1/t। वहां तक ये आइडेंटिकल है, दैट्स ऑल। सही बात है। मतलब ये जो उसका पीरियोडिक मोशन का जो टाइम पीरियड है, हाँ ये भी क्या हम उससे निकाल सकते हैं क्या, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी से? नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, अरे वो सिर्फ ऑसिलेटरी के उसके लिए है लिए ना। हाँ, वो तो उससे होता है ना, जो बॉब और लेंथ होनी चाहिए हाँ, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। ये तो जैसे आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट इज लाइक दिस, 12th स्टैंडर्ड में जो पढ़ाते हैं ऐसे होता है। साइन ग्राफ। हाँ, नहीं, साइन ग्राफ एक कॉस दिस इज थीटा। ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके। एसी। हाँ, तो ये रिपीट हो रहा है, इट हैज अ अच्छा। टाइम पीरियड, एंड इन 1 second सच 50 वेव्स आर क्रिएटेड। 1 सेकंड में50 हर्ट्ज। 50। तो हमारे घर में जो बिजली आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स होती है। तो फ्रीक्वेंसी भी है, टाइम पीरियड 1/50 है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन तो नहीं है, पीरियोडिक मोशन है वो। राइट, सो दीज लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, they have oscillating electric and magnetic fields, and they also have a time period, they also have a frequency. Okay, so let's talk about oscillations, which you have already defined correctly, restoration force and stuff like that. Okay, so ये mean position which you were referring to here, the restoring force is 0, net force. Net force, which is the restoring force, is equal to 0. Okay, and if you displace it from the mean position, then the force starts, हिलाते ही इसके ऊपर restoration force लगने लग जाती है, which restoration force always tends to move it towards the equilibrium position. So this is its equilibrium position or the mean position. Or when it reaches the mean position, it gains the kinetic energy due to the work done by the restoring force. So if you are here, so restoring force is doing work, you come here like this. So here you, at the mean position, you do have some kinetic energy because the restoring force is doing some work on you and taking you towards the
mean position, and therefore it overshoots the mean position then, right, with some velocity, but in the other direction. तो दूसरी direction में जाओ, again the restoring force will come, right, and therefore motion will be, तो इधर जाएगी तो restoring force आता जाएगा, तो फाइनली इस तरफ जब जा रही होगी तो gradually the motion will get retarded, right, तो स्लो हो जाएगा, रुक जाएगा, और जैसे ही रुकेगा फिर से रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लाएगी। तो इस तरफ भी जब जा रहा था तो रिस्टोरिंग फोर्स तो तब भी थी, लेकिन काम कर रही थी रिटार्डेशन का, इसको स्लो डाउन करने का। फाइनली इसको स्लो डाउन कर देगी और फिर से ये उल्टी डायरेक्शन में आएगा। अब रिटार्डिंग फोर्स फिर से इसके ऊपर वर्क डन करेगी और फिर इसकी मेन पोजीशन पे वेलोसिटी आ जाएगी। सर, हाँ, अगर हम बॉब को जो है एक्सट्रीम्स पे ले जाए तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी क्योंकि एक्सट्रीम डिस्टेंस पोजीशन पे। ज्यादा है ना, हाँ। मतलब when it retards and reaches the most extreme points. The retardation force is not a constant force. It depends on how far you are from the. So if the displacement is maximum, although it is stationary, yet it is facing the. So its velocity is zero, but the retardation force is maximum. Though it is stationary, by the way. ठीक। This maximum distance which it reaches and stops is called as amplitude. Is called as amplitude. ठीक है जी. So this is what is, we will describe it later, but broadly this is the concept of a simple harmonic motion. The moment you displace a body from its equilibrium position, a force appears on it, and that force appears in such a way that it is always directed towards the mean position. So अगर आपको कोई भी motion prove करना हो, it's a simple harmonic motion. This is the strategy, that the force which is there on it because of the motion away from the equilibrium is equal to minus x. So it is in the reverse direction. The displacement was in this direction, but the force was in this direction. So it should come out to be in this manner. If you prove this for anything, could be in electrostatics, where a charge is moved and the charge wants to come back to its original position, तो वो भी चार्ज भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह बट ऐसे भी होता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये. So I'm giving you a glimpse of 12th standard. Okay, so this is your electric field and this is your dipole. Okay, and you touch the dipole a bit, तो ये dipole जो है ऐसे ऐसे oscillate करने लग जाता है. So that also is a case. उसमें भी यही प्रूव करना होता है कि the electrostatic force, which is the net electrostatic force, is proportional to the displacement of the, थोड़ी सी सर, डिस्प्लेसमेंट. हाँ, सर ये डाइपोल की डायरेक्शन क्या कहते हैं, माइनस टू प्लस. नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है ना? हाँ, फिर so, केमिस्ट्री में ये पॉजिटिव टू नेगेटिव रहती है। हाँ. So this is oscillation. Let's talk about the concept of periodic function. Okay, so if you have a body which is moving along the x-axis, okay, and time dependent इसका motion है, then x is equal to ft, okay, or xt लिख लो इसको. Okay, so if the motion repeats itself after a certain time period, then we say xt is equal to x of t plus t. So after every t, it comes back to the original position. जो t पे थी वो t plus t पे भी वापस आ जाती है, right? So the particle is found at the same position
moving in the same direction with the same velocity and acceleration after the time period t. So the body is found to be at the same position after time period t. It is found to have the same velocity. It is found to have same acceleration. Same position, same velocity, same acceleration always. Okay, after every time t. Okay, where t is the bare minimum change in time, which results in repetition of position, velocity, and acceleration. Everything becomes same. Such a function mathematically is known as a periodic function. The function that repeats itself. The function, तो कई बार mathematically भी पूछते हैं, prove that this is a repetitive function. It's a periodic function. The function that repeats itself is called as a periodic functions. So these are uh, okay, so they are bound functions, which means they don't go till infinity. Okay, they are, we call them such a functions as bound functions. They are bounded. They should not go to infinity, but should come back to the position where they were after every time capital T. And now the periodic functions are categorized as two types of functions. One function, which is periodic in nature, is periodic motion, periodic motion, periodic oscillatory function, and then there is something called as periodic non-oscillatory function. So it is periodic, but it is non-oscillatory. So for example, let's talk about circular motion, right? Circular motion is going to repeat itself with a uniform circular motion. It is going to come back to the same position, starts from here. Every time period t, it will come back to its original position, right? Or but there can be an oscillatory function also, right? Periodic oscillatory function such as bob and all that. जो होते हैं, the planet, the motion of a planet, like you said, motion of a planet is a non-oscillatory. Circular motion is also a uniform circular motion is also. There is a frequency time period, but it's non-oscillatory. Now, mathematically, how do we show that the function is periodic and oscillatory? Yeah, periodic or non-oscillatory, right? So let's say you're given a trigonometric function and it is given to you x is equal to a sine of omega t plus alpha. The question is, what is the time period of this function? Now we know it's a trigonometric function. A trigonometric function by default repeats itself sine after every 2 pi. It reaches the same state. So what we have to prove is that the sine of theta is equal to theta plus 2 pi, right? For this. This is known to us because the nature of sine is the time the time period of sine is 2 pi. It repeats itself. So it is equal to a sine omega plus, sorry, t की जगह what we do is we put t plus 2 pi by omega, because this is omega, it's frequency. So omega is equal to 2 pi by t. So t is equal to 2 pi by omega. So हम देखते हैं कि यहाँ पे t plus टाइम पीरियड डालते हैं तो क्या सेम वैल्यू आती है, a sin omega t plus alpha plus 2 pi. So this is 2 pi plus some angle.
is equal to a sine 2 pi plus theta. So it repeats itself. Omega t plus alpha is equal to a sine omega t plus alpha. So it repeats, right? Yes, sir. After every t, it's repetitive. It coincides. So what is the जो x है, x motion, उसका जो पीरियड है दैट इज 2 पाई बाय, ये तो एट एनी टाइम इंस्टेंट है, बट इसका जो रेपिटेशन है इट हैपेंस एट 2 पाई बाय ओमेगा. So let's say you're given another function which is y is equal to sine omega t plus sine 2 omega t plus sine 3 omega t. You have to show find the period of this function. That's a question. This is sine of A plus sine of B plus sine of C. And you have to find the period of this function. It's a If you notice, इसमें जो ये वाला फंक्शन है, omega is 2 pi by t and 2 omega is equal to 2 pi by 2t and 3 omega is equal to 3 into 2 pi by t, right? 2 pi by t, 2 times 2 pi by t, 3 times 2 pi by t. So t1, if this is your um, function, basically is y is equal to y1 plus y2 plus y3. सबके टाइम पीरियड लिख लिए और ये सही लिखे हमने टाइम पीरियड. ओमेगा 2 पाई बाय टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, 2 ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक ही लिखा है. हाँ मतलब टी को लिख लेते हैं. टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर टी लिखना पड़ जाएगा इसका, 2t हो जाएगा ना जो टाइम पीरियड है इसका. तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 2t, इसका ओमेगा, इसका ओमेगा 2 ओमेगा is equal to 2 pi by t. So t is equal to pi by omega. Okay. इसका t is equal to 2 pi by ओमेगा है. और इसका जो t है, ये वाला, ये t1 हो गया, ये t2 हो गया पाई बाय ओमेगा. और अगर मैं 3 ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय t करूँ, so t is equal to 2 पाई बाय 3 ओमेगा. So this will be पाई बाय ओमेगा. t3 is equal to, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके और इसके बीच में, ये दिस इज t1/3 एंड t2 इज इक्वल टू t1/2, हाफ आ रहा है उसका. t2 इज इक्वल टू t1/2, t2 इज इक्वल टू t1/3. यहाँ से स्टार्ट करा. सो नाउ वी नो द इंडिविजुअल. सो t1 is equal to 2t2 and t1 is equal to 3t3. 3 गुना हो गया उसका. और तो t1
ये ठीक लिखा है हमने? हाँ ठीक ही लगा। 2T2 और 3T3, मतलब T1, ये कितना हो गया, T1/2, और ये हो गया T1/3। ओके। ओके, तो ये जब टाइम पीरियड अपनी ऑसिलेशन पूरे करेगा टी में, ये कितनी ऑसिलेशन करेगा उतने टाइम में, आधे टाइम पीरियड में, उतने टाइम पीरियड में, सॉरी, दिस विल डू वन ऑसिलेशन इन द सेम टाइम पीरियड, दिस विल डू टू ऑसिलेशंस, क्योंकि इसका टाइम पीरियड आधा है, एंड दिस विल डू हाउ मेनी, थ्री ऑसिलेशंस, इसका टाइम पीरियड 1/3 है। So the time period of the function is the biggest time period, क्योंकि सबके पूरे हो जाएंगे, इसका एक होगा, इसका दो हो जाएगा, इसके तीन हो जाएंगे, तो ओवरऑल टाइम पीरियड ऑफ द फंक्शन इज टी। This also goes to prove that the sum of periodic functions is also periodic. So if you have individual periodic functions, the sum will be the periodic function, and the period of the largest period, the period which is the largest will be the period of the total function, क्योंकि उसके टाइम में, जैसे कि ये इसने सिर्फ एक ही ऑसिलेशन पूरी करी, तो इसकी एक ऑसिलेशन होना जरूरी है, तभी इसका एक टाइम पीरियड बीतेगा। दूसरे ने उतना ही टाइम पीरियड में दो कर ली, और तीसरे ने उतना ही टाइम पीरियड के अंदर तीन कर ली, तो ओवरऑल टाइम पीरियड जो है फंक्शन का, वो सबसे बड़े वाला है, क्योंकि सबने completely they're back to the same position in that time. So the biggest time period will be known as the period of the function. The sum of periodic function is also a periodic function. So sometimes you do get questions in which the function is given to you and you're asked to calculate the period of the function. This is the way you need to do that. It's mathematical in nature. It's more of trigonometry rather than physics per se. पीरियोडिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में भी है, साइन हाँ ग्राफ होता है कॉस ना, ग्राफ। पीरियड पीरियड। थोड़ा सा डिफरेंट है पढ़ने में, बट जेई के सिलेबस में ये क्वेश्चन आते हैं। यार सो योर फेवरेट क्वेश्चन हैज कम। हम्म। हाँ बहुत ही बढ़िया है यार। वैसे तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट ठीक है, इतना मैंने स्टेटमेंट में बोल ही दिया था। बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट जेई ने उसको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर ही दिया, so we can use this also as a reference. ये रहा।
restoring force is proportional to displacement, one. ट्रू है. The acceleration and displacement are opposite in direction, two. This is also correct. Velocity is maximum at the mean position. Yes. Yes. A, B, C. Uh, the acceleration is minimum at extreme points. I don't think so. I think it's maximum. It's maximum. Velocity is minimum. Yes, that is correct. This is your SHI motion actually, right? Hmm. मेरा वाइवा का And क्वेश्चन था ये. uh, and if you were to draw a diagram, then if this is your mean position, this is your amplitude. So you reach A, and then you reach uh, B. Okay. This is your mean position, and this is your mean position. This is your so this is your amplitude anyway. This is your sum position X. Amplitude is the maximum, and so it's an X-axis SHM, and this is your neutral position, also known as neutral position or the equilibrium position, and the amplitude on either side is equal, and acceleration, which is coming from the restoring force, is proportional to X, and vectorially A is given to be minus omega square X. Okay. Vectorially अगर हम बात करें तो this is important, omega square X, and this is what we tend to prove. So MA is equal to minus omega square X, or force, the restoring force is equal to minus M omega square X. This is very important. So if you put X is equal to 0, you will get F is equal to 0, which means it experiences no force at the uh, mean position. So to start this, we always need a slight amount of external force. So to start a simple harmonic motion, a slight amount of external force is always given at the main position to set the system up in simple harmonic motion. And the oscillatory amplitude is very small, by the way, okay? You cannot say कि I will disturb the, particle in simple harmonic motion बहुत ज़्यादा. मतलब I'm saying this is in millimeters, for example, okay? If you disturb a particle in very large quantity, right, then SHM does not happen. You need to only disturb it uh, to a very small. So if you have a surrounding dimensions, okay, then you don't disturb it. कि भैया I have a dipole in an electric field which can oscillate in an electric field up and down like this. मैं उसको बिल्कुल नीचे तक ले जाऊंगा. Then you won't be able to get SHM. Okay, so for SHM you need the oscillation amplitude to be very small as compared to the surrounding dimensions. Okay. Okay. This is an important consideration. So what is amplitude? It is a maximum displacement of the executing SHM, right? The maximum displacement of the executing SHM about the mean point. So one is you should know what is an amplitude. The second thing you need to know is time period. T equals to
2 pi into That under root L by is, G. we will come to all of that. But time period is something, the theoretical definition, the periodic motion that repeats itself in equal time intervals. It is Oh, known as the time period of oscillation. क्योंकि हम periodic function नहीं अब oscillations पढ़े हैं, simple harmonic motion. And then there is another term which is associated with it. It is called as angular momentum. frequency. अच्छा, frequency. Angular frequency of the, so it is a number of revolutions performed per unit basis. So each, but there is no revolution as in a revolution in a SHM, but each oscillation can be mapped to a revolution. Each oscillation can be mapped. There is a way to show that oscillation में जो बॉडी है उसको एक स्पेशल तरीके से जब ड्रॉ करते हैं तो एक सर्कुलर टाइप का रेवोल्यूशन टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है, राइट? सो वी से दैट इट हैज एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी आल्सो in that particular coordinate system. So if you have 1 second, the number of revolutions which are covered is some number, and 2 pi is the angle covered in every uh, revolution. So the angular frequency omega of a simple harmonic motion is given by 2 pi by t. We will study the context of angular frequency. Suddenly angular कहाँ से आ गई और revolution कहाँ से आ गया later. But you should know that not only there is a frequency of oscillation, which is f is equal to 1 by t, that is the number of oscillations per second, but there is also a new term, which is the angular frequency, omega, जो हमने यहाँ लिखी थी basically. बट इसका कॉन्टेक्स्ट अभी हमें मालूम नहीं कि क्या है ये m omega square x. This is a general equation of a simple harmonic motion. Theoretical डिस्कशन चल रही है अभी. Okay, next page. Okay, so let's talk about the math of it, which is the equation of, क्या आ रहा है ये? Equation of simple harmonic motion. Okay, so in 12th standard you will study something called as differential equation. So it's basically a kind of double derivative, d square x, double derivative of its position from the mean position, and therefore it is written as omega square x. ये होता है. If you have a equation which is written like this, कई बार चार choice में से आता है, so you have to see there is a double derivative, there is an x. So when the double derivative is proportional to x and there is some constant written, you are very clear it is a uh, simple harmonic motion equation. Okay, and then of course f is equal to, so this is a double derivative of the position and therefore is acceleration, right? So this is acceleration. So force is equal to minus uh, m into a is equal to uh, इसको k ले लो, k, so this is k and this is a, so k is a constant, k is a constant. So restoration force is proportional to the displacement from the mean position, and a acceleration can be written as kx by m, okay, with the minus sign to show that acceleration and x are always in opposite directions. Okay, and this is the instantaneous position. Anyway, this is an instantaneous position, and therefore this is also an instantaneous acceleration. So you have a situation of not a uniform acceleration motion where a is v is equal to u plus at, but a different type of motion where acceleration is proportional to x. Generally, तो a is equal to v minus u by t होता है ना.
So what we do now is we multiply both the sides by dx by dt. So what we write this as dt by dt dx by dt, ये तो डबल डेरिवेटिव ही हो गया, मल्टीप्लाई बाय dx by dt is equal to minus kx into, sorry, minus k x by m multiply by dx by dt. So this quantity is the velocity, and dx by dt. So this is v multiply by, so this is velocity, this is velocity, so this is d, this is also velocity, so dv by dt is equal to minus kx by m multiply by dx by dt. So if we integrate both the sides, this is v dv by dt is equal to integral of minus k by m dx by dt into x, and therefore we can write this as v square by 2 is equal to minus kx square by 2 into m plus c. So what we get now is dx by half of, this is dx by dt whole square is equal to minus kx square by 2m plus c, constant of integration. Now when x is maximum, when this is maximum displacement, when x is maximum amplitude matlab, then the velocity is what? 0, which is this. So dx by dt is equal to 0 at maxima. ये हमें मालूम है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा क्या आएगा? c will come out to be, so this is 0, x is maxima matlab a, so c is equal to minus k a square by 2m. So your equation of, ये बेसिकली जो मैं कर रहा हूँ सारा का सारा, these are standard tricks in differential equations. Okay, you don't need to know. If you don't know, it's okay. So half याद कर लेंगे। dx by dt whole square is equal to minus k by 2m a minus x square. And now you know that uh, k by m is equal to omega square, and therefore, so this is basically your velocity which is continuing. So half of uh, so d, so this is k by 2m, so this is omega square, so half dx by dt whole square is equal to minus k by 2m a minus x square. They are trying to link velocity with, पहले एक्सेलरेशन से स्टार्ट करा, एक डेरिवेटिव कम कर दिया, डबल डेरिवेटिव का सिंगल डेरिवेटिव ले आए और उसी डायरेक्शन में काम करते जा रहे हैं. सो दिस इज 2 इज गॉन, and therefore this is 2 dx by dt. The instantaneous velocity is given to be omega under root of a square, sorry, a square minus x square. So your dx divided by under root of a square minus x square is equal to omega dt. If you integrate it, what you get is, this is basically sine inverse of x by a. Sine inverse of x by a is equal to omega t plus phi, where phi is another constant. And if you solve this, x is equal to a sine omega t plus phi. And this is the equation of the simple harmonic motion. Simple harmonic motion is written like this. If you take single derivative of this, you will get a omega cos of omega t plus phi. So this is your instantaneous velocity. So double derivative से
को सॉल्व करने का मतलब होता है x इक्वल टू कुछ लेके आओ. You have a double derivative. You have to say find the solution of a double derivative equation. This is the solution. When you were in 12th standard, many double derivative equations, etc., will be given. Question will be find this. So these are all standard tricks. If you know, you know. You don't know, it's okay. So x is equal to a sine omega t plus phi. This is a standard SHM equation, sinusoidal equation, right? This is the angular frequency. Now we will define gradually what is phi. It's a phase. Okay, from it may not start from at t equal to 0. It may not start from the mean position. You may not like to start it from here. You may like to start the SHM from 30 degrees. So this phi represents at t equal to 0 where it was. So maybe this is your SHM starting like this, generally from the mean position, but sometimes you may be here to start with. Okay, so the start point is decided by this phi. It's called the phase, the initial phase of the uh, simple harmonic motion, the start point where it was. And this is the angular frequency. And if you take single derivative, you get this. If you take double derivative now, back, you will get minus a omega square sine of omega t plus phi. So this is its linear acceleration. You can see the negative sign. And if you see this equation and this equation, this is acceleration. This particular part is the, with a, is the linear acceleration. So a comes out to be minus x into uh, omega square, right? So again goes, if you multiply it with m, which is, we wrote like that. So ma is equal to x omega square m. Right, so it shows that the restoring force Ma is with a negative sign. The more is the displacement, more is the restoring force, and they're in the opposite direction. The direction of displacement is this. The restoration force is in this direction. Right. So sometimes equation of SHM depends. तुम्हें तो नहीं आएगी स्कूल में, but this is just a glimpse of how it is done. You just need to know this x is equal to a sine. It can be cos also, by the way. Okay, so no problem. You may start the SHM not from the medium position, but you may start here. Okay, so this will become cos in that case. Okay, so this is your mean position. You may start here. डिपेंड करता है आप कहाँ से शुरू करते हो, क्योंकि आप बॉब को यहाँ से धक्का मार के स्टार्ट करो तो वो ऐसे जाएगा, या आप बॉब को शुरू में यहाँ पे रख लो ऐसे और छोड़ दो तो भी मोशन तो वही रहेगा, बट द स्टार्ट पॉइंट विल बी 90 डिग्री अहेड ऑफ दिस पॉइंट, विच मींस कॉस होगा, इसकी इक्वेशन को साइन में होगी. दैट इज द ओनली डिफरेंस, बट द मोशन रिमेन्स SHM. Okay, and this phi, as you know, is the initial phase. This is an indicator of where did you start. If phi is 0, then obviously you started at the mean position. If you start, phi is 90, you started at extreme position. इसको phi को initial phase भी बोलते हैं, और जेई के कई पेपर्स के अंदर you may see the word epoch constant. Okay, just a way to tell you where did you start it. That's all. Okay. Right? So if you know x is equal to a sine omega t plus phi, you're good to go. Take a derivative, omega बाहर आ जाएगा. This this will also tell you that if x is equal to a sine omega t plus phi and t is equal to 0, then x is equal to a sine phi. And if your phi is also 0, then x is equal to 0, which is a mean position. And if you take a derivative of this, dx by dt is equal to a omega cos of omega t plus phi. So this, if phi is equal to 0, t is equal to 0. So this will become cos of 0, which is 1. So this will become v is equal to v max, the highest velocity at the mean position. T is equal to 0.
t इक्वल टू जीरो पे जीरो हो जाएगा ना, तो यस। वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट द मीन पोजीशन, the velocity is maximum. This is Vmax. Vmax is equal to A into omega. Take another derivative of the same thing. You will get minus A omega square sine of omega t plus phi. So started here, t equal to 0 या t is equal to time periods जो भी आ रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा, 2 पाई के मल्टीपल्स आ जाएंगे यहाँ पे, और हमारा t is equal to 6 पाई. ओके, सो 2t, so दो टाइम पीरियड बीत गए, सॉरी, t is equal to 2t, so 2 by t2 into 2t, tt cancels 4 pi, so sine of 4 pi is 0. So mine, and if it is extreme pi, extreme जगह पे है, तो minus a omega square into 0 at the mean position. So at the mean position, the acceleration of the body is 0, and the maximum you can get is, this is the maxima. If it's a sine function, acceleration is equal to minus a omega square sine of omega t plus phi. So this is a maximum value can be 1. So this is your maximum value of the a max. The maximum acceleration which a SHM can have is this amplitude. ये amplitude of velocity है, highest possible. सबका ग्राफ जो है, अगर आप बात करें, तो SHM का ग्राफ ऐसा बन रहा है, अगर अज्यूमिंग फाई टू बी जीरो, नहीं तो कहीं और से स्टार्ट करना पड़ता हमको, और नीचे ये भी फाई, तो दूसरे वाला कॉस है वेलोसिटी का, सो वेलोसिटी विल बी cos omega t cosine, and acceleration will also be same, but acceleration will be with a negative sign. So acceleration नीचे की तरफ बनेगी, नेगेटिव साइन, तीनों ग्राफ भी अभी बनाएंगे हम. So this is x versus t graph for a simple harmonic motion, which is this. पाई जीरो है इसके अंदर. Okay. Now let's say you have a situation where a body is motion of an object connected to to a spring. Same SHM में होता है, right? So you have a block and you have this spring. इसमें भी restoration होती है, और ये आपका ground है, frictionless, no loss of energy after thousands of oscillations, also no loss of energy. Slightly, don't pull it very long. So the external surrounding for dimension, this may be 1 meter long. Don't pull it by 1 meter. Pull it slightly as compared to the external dimension. थोड़ा सा इसको touch करना है, and you will set it in a simple harmonic motion. So this is your x equal to 0. You touch it and it starts oscillating in a simple harmonic motion. Remember, the restoration force is always directed towards the mean position. चाहे वो इस तरफ चला जाए थोड़ा सा, तो भी मीन पोजीशन की तरफ रिस्टोरेशन फोर्स है, फिर इसको ओवरशूट करके मीन पोजीशन को इधर आ जाए, तो भी रिस्टोरेशन फोर्स इधर है. रिस्टोरेशन फोर्स विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. ठीक है। Right? So spring is yet another example. And when we say MA here, right? So we are also saying ki, Newton's second law of motion, right? Mass into acceleration is kx, right? So max, max is equal to minus kx, basically. And this is equal to, ax is equal to k by m, ax is equal to minus k by m into x is equal to minus omega square x. So omega is equal to under root of k by m. So acceleration of the body is proportional to the position. In a spring mass system, ये भी पता होना चाहिए कि spring mass system के अंदर is same as a bob. Bob आएगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर में आएगा वो. Now let's say
एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या कॉन्टेक्स्ट है, वेरी ब्रीफली, if we study this, so let's say there is a simple harmonic motion, SHM, and then a uniform circular motion is also there. So let's say there is a body which is moving in a circular motion. So uniform circular motion. So wherever the body is, जैसे बॉडी यहाँ पे पहुंची है, ये एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है, तो इसका जो यहाँ पे प्रोजेक्शन है वो ये आया, फिर ये यहाँ पे गया, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ पे पहुंचा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आया एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे आया, इसका प्रोजेक्शन यहाँ आया, यहाँ पे आया, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आया, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, राइट। सो ये जो जो ये प्रोजेक्टेड पॉइंट्स हैं, व्हाट व्हाट इज प्रूव्ड इज दैट द प्रोजेक्टेड पॉइंट्स आर डूइंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो अगर आप यहाँ पे एक पहिया बांध लो, okay, it's a and you keep a torch on top of it, okay, a big torch is kept, right, and this पहिया is made to rotate, it rotates and there is a floor down below. What you will find is that the below floor there is a point which is moving with, जैसे ये इस पॉइंट पे मार्क कर लो आप, ये पॉइंट जब नीचे हिलेगा तो पहले ये, अगर मान लो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा तो आएगा, तो जो इसकी प्रोजेक्शन है पॉइंट की एक्स एक्सिस के ऊपर, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिबिट करती है, उसकी शेडो ये लाइट है। और ये जो सर्कुलर मोशन है नीचे जब प्रोजेक्ट होता है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नजर आता है। सो तभी हम बोलते हैं कि ये दे आर लिंक्ड टू ईच अदर इन अ सर्टेन मैनर, एंड दैट constant angular speed circular motion, the projection of it is a simple harmonic motion। अब मैं इसकी डेरिवेशन के अंदर नहीं जा रहा हूँ कि व्हाट इज अ डेरिवेशन, बट आई होप इट गिव्स यू सम आइडिया कि ये जो प्रोजेक्टेड पॉइंट्स हैं ये वाले, ओके, ये एसएचएम ऑसिलेट कर रहे होते हैं, जैसे जैसे ये फिर नीचे आ जाएगा ये, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, राइट, वापसी की तरफ, जब इस तरफ जा रहा है ये पॉइंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, फिर जब वापस आ रहा है तो इस तरफ ट्रेवल कर रहा है सेंटर की तरफ। सो द प्रोजेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द एक्स एक्सिस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड सो एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्टेक्स्ट यहीं से निकल के आता है बेसिकली। ठीक है। इट्स सो इफ यू वर टू से, राइट, इंग्लिश क्या है, सो सिंपल हार्मोनिक मोशन along a straight line can be represented by the projection of uniform circular motion along the diameter of a reference circle। तो diameter ही तो है ये, it's a diameter, right? So somebody said using circular motion show us simple harmonic motion. So I'm showing you, this is my torch, this is my rotational motion happening, and I am seeing below the shadow and I see clearly a simple harmonic motion happening. So the projection of a circular motion along a straight line gives you a simple harmonic motion। There is ठीक है। no need to get into nitty gritty, कई बार स्कूल वाले, बट इतना ही काफी है कि what is the link between them, you can just write कि ये प्रोजेक्शन यहाँ पे हुई, यहाँ प्रोजेक्शन हुई, तो यहाँ पे जब प्रोजेक्शन हुई एक्सट्रीम पॉइंट पे तो हम यहाँ पे हैं, जब यहाँ पे आए तो यहाँ, मान लो यहीं से शुरू करा था आपने फिर इधर चले गए, तो हर पॉइंट की प्रोजेक्शन जी यहाँ पे इसकी ये है, इसकी ये है, फिर एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच गया तो एम्पलीट्यूड है, तो जो शेडो है इट इज एक्चुअली मूविंग लाइक अ, सो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द सर्कल will represent the one complete oscillation of SHM। That's a whole point। ठीक है। Okay, now question, now that we have a sense of that it is always sine omega t plus phi is a simple harmonic motion, but इसके लिए थोड़ा सा डेरिवेटिव की समझ होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए। सो यू फॉर एग्जांपल आर गिवन y is equal to a e I omega t, okay,
Now, can you see if it represents a simple harmonic motion as per you? Remember, the simple harmonic motion invariably on a double derivative basis is this. Double derivative is equal to how much? कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट? इसका सोल्यूशन फिर साइन आता है। तो ये इक्वेशन अगर मैं दे दूं और बोलूं y इज इक्वल टू, एक चीज, एक मिनट। तो टेक डबल डेरिवेटिव एंड ट्राई एंड गेट इन दिस चलिए फॉर्म। आई। अच्छा। हाँ, ओके। टेक डबल डेरिवेटिव, टेक सिंगल डेरिवेटिव फर्स्ट, ट्राई एंड गेट दिस इन दिस फॉर्मेट। इफ यू आर एबल टू प्रूव दैट इसका डबल डेरिवेटिव ये आता है, तो वैसे इट इज अ ई सिंपल रेशो और हार्मोनिक। आई ओमेगा टी का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? अरे, ई रेस टू पावर टू थीटा का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू पावर टू थीटा इंटू टू। ये तो कांस्टेंट है। हम्म। ले लिया तो इसका आई ओमेगा आ जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है। ठीक है। प्रोडक्ट रूल से कर लूँ? प्रोडक्ट रूल की क्या जरूरत है? अच्छा। एक्सपोनेंशियली तो है सिर्फ, ये तो फिक्स नंबर है। ई का बस आई डेरिवेटिव आता रहेगा। आई ओमेगा। यू फर्स्ट राइट डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ई का तो सेम ही रहेगा, हम्म। चेन रूल लगेगा, फिर आई ओमेगा का, आई ओमेगा टी का आएगा, आई ओमेगा। ठीक है, तो ये बन गया ए आई ओमेगा ई रेस टू पावर आई ओमेगा टी। टेक अनदर डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। हम्म। यस, राइट। सो आई स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस वन, ए हाँ। आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई आई इक्वल ओमेगा टू टी, दिस दिस इज ए माइनस वन। हाँ, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। ई रेशो ओवर आई ओमेगा टी। हाँ, एंड व्हाट वाज दिस? ए एंड ई आई ओमेगा टी, they were y, so this became minus omega square y. So यस। the double derivative has come out to be exactly identical to a differential equation of an SHM. जब हम्म। हमने डेरिवेशन करी थी तो यहीं से तो स्टार्ट करा था। ठीक है। नहीं याद? लुक एट दिस, नहीं। वेयर वी स्टार्टेड द हाँ, डेरिवेशन, ये याद है, टॉप पे। याद है। तो दिस इज अ SHM हम्म। proved using the knowledge of differential equation. So let me give you one more. Y is equal to a sine square omega t. This is slightly heavy on derivative. Show, वेरी हैवी। prove, if, identify if this is a SHM or not. Maybe it is not.
A into 2 omega cos square t. सिंगल डेरिवेटिव है ये तो. हाँ. Hold on. So just a sec. So when you take derivative of sine square omega t, you are doing this, right? हम्म. 2 sin omega t, then sin omega t का cos omega t, then omega t का omega. ये x स्क्वायर नहीं है. इट इज नॉट एल्जेब्रा. x स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं ले रहे आप. व्हाट इज दिस x? नहीं, सॉरी, साइन ओमेगा. हाँ. और सेकंड डेरिवेटिव. ये 2a ओमेगा तो कांस्टेंट हो गया. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? cos 2 ओमेगा ओमेगा. t इंटू 2 ओमेगा हाँ जी. इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर a cos 2 ओमेगा t. ये तो नहीं है बिल्कुल भी. नहीं. नहीं है. हाँ. वेरी फेमस क्वेश्चन. बड़ा मतलब एक रन ऑफ द मिल क्वेश्चन है. मोर ट्रिग्नोमेट्रिक सेंट्रिक एंड a ओमेगा sin t डिफरेंशिएशन प्लस इसके b अंदर. cos omega t. Show that if this is an SHM or not. Or not. नो, Not that नो. it is. May not be. Fraud. एक नॉर्मल डेरिवेटिव जैसे लेते हैं. dy by dt is equal to a omega ए cos ओमेगा omega t कॉस. minus b omega sin omega t. d square y by dt square is equal to minus a माइनस ए omega ओमेगा square स्क्वायर साइन sin टी. omega t minus b omega square cos omega t is equal to minus omega square a sin omega t plus b cos omega t is equal to minus omega square y. SHM. समझ आ गया? So you do get questions in JEE mains where they clearly specify, prove that the following is a, ऐसे लिख देते हैं, but it is not an SHM but a periodic function. You know, कम से कम वो तो प्रूव कर ही दो. तो जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया इन्होंने उठा के कि साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी. वो SHM तो नहीं आएगा बट पीरियोडिक तो होगा ना, क्योंकि सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शंस इज अ पीरियोडिक फंक्शन. क्लियर? यस. बढ़िया. डेरिवेटिव्स की नॉलेज होनी चाहिए. ये चैप्टर हाँ 12th में होना चाहिए था इस कायदे से. हाँ. पकड़ा दिया. Okay, so let's draw some graphs in SHM. Okay, so different graphs in SHM. मीन पोजीशन हम एपॉक कांस्टेंट को 0 ले रहे हैं और हमारा ग्राफ, पहला ग्राफ साइन का ये आता है. ओके, फर्स्ट. देन करस्पॉन्डिंगली द बिहेवियर ऑफ
बिकॉज अब पोजीशन मीन पोजीशन पे हाईएस्ट वेलोसिटी होती है, तो हाईएस्ट वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे ए ओमेगा होती है। और 90 डिग्री मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो ये जीरो हो गई एक्सट्रीम पोजीशन पे। और उसके बाद ये वापस मीन पोजीशन पे आ गया, तो उल्टी डायरेक्शन में वेलोसिटी हाईएस्ट हो गई, और ये जो है ऐसे आ गया ये। दिस इज अ कोसाइन ग्राफ, सो दिस इज v इज इक्वल टू a omega cos of omega t। दिस इज x इज इक्वल टू a sin omega t। ठीक है जी। और तीसरा जो है, अगर आपको एक्सेलरेशन का बनाना पड़ जाए, या ये इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बाय द वे। ओके, सो वन इज अ वेलोसिटी इक्वेशन, देन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एंड स्टफ लाइक दैट। वेलोसिटी एक्सेलरेशन का बनाना पड़ जाए तो उल्टा बन जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, ये वेलोसिटी का ग्राफ है। और अगर आपका माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आ गया एक्सेलरेशन, सो ए इन्वर्ट हो जाएगा, जो भी वैल्यू ऊपर की तरफ है वो नीचे की तरफ बन जाएगी, और वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। उल्टा साइन ग्राफ, उल्टा रिवर्स साइन ग्राफ। तो ये एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया आपका। ठीक है? अगर ओके। आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ही कॉस में है, ये वाला x इज इक्वल टू, ये कॉस से स्टार्ट होता है, तो फिर कॉस से स्टार्ट करो इसको, स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू एंड एंड इट हियर। So this is 0, this is extreme 90 degree, 180 degree, and another 90 degree, 360 degree। ठीक है। और अगर ये ग्राफ जो है आपका, इट हैज सम स्टार्टिंग epoch, which means you have a starting value, not starting from zero। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू से x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट यहाँ से। तो ये क्योंकि इसकी स्टार्टिंग वैल्यूज t इक्वल टू जीरो पे कुछ है, तो साइन ग्राफ ऊपर से स्टार्ट कर लो यहाँ से। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर एंड गोज टिल हेयर। ये स्टार्टिंग होगी ना साइन की, साइन यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, साइन को प्लस फाइव पहले ही मिला हुआ था, तो साइन की वैल्यू थी कुछ t इक्वल टू जीरो पे, इट हैड सम वैल्यू। डब्बा बना के भी यू कैन ड्रॉ, putting the values and solving it। This is more knowledge of trigonometry, graphs। ठीक है जी। ठीक है। Okay, so there is a particle that executes SHM with the frequency of 10 hertz or 10 per second, one and the same thing. And the initial displacement of the particle at t equal to 0 is equal to 4 centimeter. It's in the positive direction. You have to find the displacement equation. Displacement equation. So x at t equal to 0 is given, and you have to find the v max, and you have to find the a acceleration, which is again maximum, a max. Everything is a variable. You can see it's a sine graph. It's a variable one. Given frequency of SHM is this. One more information about SHM is available. You have to first write the differential equation. You have to find the V max, and then you have to find the A max. So initial position is not zero at t equal to zero, but there is an epoch. It has a position already. Okay, sorry. One more information is available. The amplitude of oscillation is 8 centimeters. So A, capital A is also known. Obviously, A dena zaruri hai. Write the displacement equation first.
You should know how to convert the epoch into angle. If it is given in x, but in the phi, right? तो ये इनिशियल पोजीशन को कैसे कन्वर्ट करोगे उसके अंदर? सो यू विल से लेट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बी x इज इक्वल टू a sin omega t plus phi at t equal to 0. X is 4. 4 is equal to a sine of phi. This is 8. So sine of phi is equal to 4 by 8. Phi is equal to 1 by 2. Phi is equal to how much? 30 degrees. So you have come to know what is your epoch. So your different equation becomes 8 sine omega t plus 30 degree. Now do double derivative, etc., and get the answer. Frequency is known to you. So you can find omega from here. 2 pi f. Omega is equal to 2 pi f. So single derivative will give you velocity 8 omega cos of omega t plus 30 degree. So 8 into 2 pi into 10. Second derivative will be 8 into omega square. 2 pi into 10 ka square. Answer. Clear? Yeah. Very school level question. Just to give you a hang of how to find the epoch if the initial position is given. Your displacement equation is x is equal to whatever, जो भी है. Okay. Next question. So you have a particle which is doing SHM between two fixed points and they are separated by 220 centimeters. ये 20 सेंटीमीटर के बीच में वो SHM कर रहा है. इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी नोट करी जाती है, which we know is where at the mean position is 30 centimeter per second. And at 5 centimeter, x is equal to 5, its velocity is noted to be equal to, uh, you have to find the velocity when the x is 5. What is the velocity of this simple harmonic motion at x is equal to 5? These are the two parameters known. Oscillates from 2 points which are at 20 centimeter. V max is 30. ठीक. Okay, just one point which I forgot. Okay, so ये हम रह गया हमारा थ्योरी. Y is equal to a sine of omega t plus phi, right? ये होता है. And cos of omega t plus phi can be written as under root of 1 minus sine square omega t plus phi. So we know that velocity वाला जो expression है उसमें cos आता है डेरिवेटिव लेने के बाद. So this is basically under root of 1 minus y square by a square. And cos omega t की अगर मैं बात करूं, that is डेरिवेटिव लेने के बाद जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, that is v is equal to v by a omega. इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना dy बाई, तो ये वेलोसिटी बन जाती है और एक ओमेगा बाहर आ जाता है. तो जो cos ओमेगा t प्लस फाइव होता है, दैट इज v अपॉन a ओमेगा. सो v अपॉन a ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय a स्क्वायर. इफ यू डू स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, इट्स v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. और दिस इज v square by a square omega square is equal to a square minus y square upon a square. ये कट गया. So ये आ गया v square is equal to omega square a square minus y square. So if you know the position of a body y,
you can find the corresponding velocity with the help of this expression. V square is equal to omega square a square minus. So you have to memorize this. By chance मैंने करा ही नहीं है. So memorize this. Similarly, you can do for acceleration also. Okay? So if you know y upon x upon position of the body, omega square plus a square plus y upon a square is equal to 1. This is what it is. एक इक्वेशन ये भी आपको पता होनी चाहिए. This connects displacement. So you can see this sorry, this is not y, this is v square. Okay, so this is v square. So this connects v and y, you can see, right? And this is an ellipse. This is an ellipse. This equation is अच्छा. that of an ellipse. ठीक है. So if you see the question now, you can go back and try this. A दिया हुआ है 10 इस क्वेश्चन में. V दिया हुआ है मैक्स. तो V मैक्स इज इक्वल टू A ओमेगा. A मालूम है, ओमेगा आ जाएगा. X दिया हुआ है. तो corresponding to any X, you can find V with the help of this equation. एक टॉपिक और रह गया बस, एनर्जी ऑफ SHM. Let me just compare the NCERT. Let me just see. फिर ऑसिलेशंस खत्म. हाँ, और क्या. ठीक है. क्विक एंड डर्टी कराया, लेकिन क्या करें. क्वेश्चंस की जो कॉन्सेप्ट है वो सारी ठीक बता दी है. न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से भी काफी खुल जाएगा दिमाग ये वाली. हाँ, ये मैं आज ऐसे लोड़ा से कर लूंगा, चैप्टर खत्म. मैं वी मैक्स दे रखा है. ये मैक्स दिया हुआ है. हाँ ठीक है. ए ओमेगा. कॉस की वैल्यू 1 होती है ना. तो ए ओमेगा दिया हुआ है. ये वी, ई वी लिखा है ना, स्मॉल वी. हाँ हाँ, ये रहा ये वाला. हाँ. वाई स्क्वायर. मतलब एक्स स्क्वायर. एक्स. डिस्प्लेसमेंट को एक्स ले लो, वाई ले लो, जो भी ले सकते हो यार. ये ए ऑफ स्क्वायर मेगा स्क्वायर 300 का भी स्क्वायर है ना. व्हाट इज ए ओमेगा. 300. वी मैक्स कितना दिया हुआ है. 300. 30 और है. इट इज 30. 30 30. 30 है 30 ना. हाँ. स्क्वायर. 30 स्क्वायर. और
ओमेगा कहाँ लिखा है? ए ओमेगा इज इक्वल टू 30 है। ए दिया हुआ है 10। इट ऑसिलेट्स बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स 20 सेंटीमीटर, तो एम्पलीट्यूड कितना हुआ? 10 ही तो हुआ। तो 300 वही तो है। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, 10 इंटू ओमेगा। एंड ये 25 ओमेगा स्क्वायर। पोजीशन दी हुई है एक्स। कॉफी बना दे राजा। एक्स कितना दिया हुआ है जिसपे निकालना है? 5। ठीक है। ओमेगा तो पता ही है। ओमेगा तो अभी निकाला है ना। ए ओमेगा इज इक्वल टू 10। ए वो ओमेगा 30। ए ओमेगा इज इक्वल टू 30। तो ओमेगा इज इक्वल टू तो 10 थ्री बाय थ्री 3। थ्री तो v² = 9 × 10⁻⁴ राइट। -50. हम्म। That's a big calculation. 9 89950 under root is equals to v. v आ जाएगा। क्या आ गया वेलोसिटी? एक्चुअली योर वेलोसिटी इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, इसका स्क्वायर रूट ले लिया मैंने। हाँ तो स्क्वायर रूट ही लेना, ठीक है। सही है। कितना आ रहा है? 300 का आ रहा है। 300 स्क्वायर इज 9 इंटू, इसको तो इग्नोर कर सकते हैं, तो कितना है? 50। वाई इज हाउ मच? अच्छा हाँ ठीक है, इसको इग्नोर ही कर कीपिंग लेते हैं। एवरीथिंग इन सेंटीमीटर आई बिलीव, राइट, कुछ नहीं कर रहे और, हाँ, है ना? ये नेग्लिजिबल ही है। हाँ। तो बी आ जाएगा 300। तो इनका वी आ रहा है 15√3। 15√3, ज्यादा ही कम, गलत होगा। ओमेगा कितना डाला है? ए कितना है? 10। ए स्क्वायर कॉमन ले लें, अगर हम ऐसे लिख लें, इसमें इसमें ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिख लिया मैंने, ओमेगा कॉमन लिख लिया। इफ यू टेक ओमेगा कॉमन, इसमें से यू लेफ्ट विद दिस, राइट। हम्म। ओमेगा कितना निकाला है? 3। ए कितना दिया हुआ? 10 स्क्वायर। ये वाई कितना दिया जहां पे निकालना है हमें? 5। 3 into 100 - 25 = 3 √75। 3 into 5 into √3, 15√3, ये क्या निकाल दिया है? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 300 स्क्वायर। ए इज 10 into 3, 30 का स्क्वायर हुआ ना। 300 कहाँ से हो गया? 900। ठीक है। भी कैलकुलेशन।
कर ही दिया है। हम्म, वही V30 आ रहा है। 30 आ रहा है। कैसे भाई? -25/3। 3 नहीं है ना, 9 है ये। ओमेगा इज 9। 5 25 9 ज़र इज 225। सो 900 -225। केजी की मैथ्स नहीं आती। अच्छा। 225 × 3 V²। कैलकुलेशन में बुरा हाल है तुम्हारा। एम ही मारे जाओगे। अरे नहीं नहीं, वो नहीं। हम्म। 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 कहाँ से?
वो हाँ जी करो। हाँ जी, सांप सूंघ गया, वॉल्यूम बंद, दिखना बंद। सांप सूंघना क्वेश्चन मतलब सुन देख गया के। मेरे को। अरे टाइम निकालना है, एक एम्पलीट्यूड टू हाफ एम्पलीट्यूड तक पहुंचना है और करना है क्या, टी निकालना है, जैसे बॉडी डिस्टेंस कवर करती है। आंसर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है इतनी इतनी है, टाइम पीरियड मालूम है, हाँ हाँ। अज्यूम कर लो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुई थी, ऐसे कुछ मान लो। या मतलब वन एम्पलीट्यूड टू आधे पे जाना है, a/2 तक पहुंचना है। नहीं, ओमेगा दे ही रखा है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही। और एक्स भी, एक्स और टी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशनशिप भी मालूम है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ए साइन कहीं ए से शुरू साइन कर लो। ओमेगा टी। हाँ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन एम्पलीट्यूड, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। हाँ। यहां से स्टार्ट आर। हुआ, यहां से स्टार्ट हो रहा है ना। तो इसका एपॉक है, मतलब π/2 है ना एपॉक। हाँ जी। तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है इसकी इक्वेशन। अब इसको यहां से लेके यहां तक पहुंचाना है, तो ये कितना डाल दें, a/2 डाल देते हैं। ए बाय टू। ओमेगा कितना है, 2 π/t, तो पाई हो जाएगा। टाइम निकालना है कितने टाइम में, तो π/2 लिख लो। ये a/2, ए बाय साइन वैसे ऑफ वन कॉस बाय टू कितना हो पाई। गया, π/6 हो गया। तो π/t प्लस π/2 हो गया। एक मिनट। आधे एम्पलीट्यूड तक पहुंचा दिया ना इसको मैंने इधर से। हाँ। रुको रुको। टी निकालना है मुझे। हाँ, रुक जा एक मिनट। अभी तो नेगेटिव आ जाएगा ना अगर ये लूंगा मैं। हाँ। तो व्हाट इज द रुका तो नेक्स्ट सही। वन, 5π/6 लेना पड़ेगा मुझे। हाफ की वैल्यू रिपीट होती है ना इंटरवल में, हम्म। टाइम नेगेटिव आ जाएगा ना इससे, जो मेरी इक्वेशन है। अरे सर एक मिनट रुको, एक मिनट रुको प्लीज। हम्म। 1 मिनट, 1 मिनट।
पाई से पाई काट देता हूँ। वन बाई थ्री। तो माइनस नहीं हो सकता है? ओके, ठीक है। ओके। हाँ जी, एनी डाउट्स? नहीं, मुझे समझ आ गया कहाँ गलती ठीक है, करी। समझ आ गया। जस्ट रिवाइज इट योरसेल्फ, डू सम न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एसएलए, हम्म। get your hands strong on these equations, and that's the end of. Then with next topic we have to do is the energy associated in simple harmonic motion, the potential energy and kinetic energy, how it gets distributed between the two. For example, on the mean position, when the velocity is maximum, the complete energy is kinetic. At extreme position, the complete energy is potential. The energy हाँ, which is by virtue of position is known as potential energy. So at extreme, the energy will convert it into potential. At equilibrium, it will convert it into uh, kinetic. And at any middle point between extreme and the एक्सट्रीम amplitude, में तो वो हाइट भी गेन करता है ना एक। वो if it is a SHM, right? हाँ हाँ। स्प्रिंग मास सिस्टम हो, या हम एक कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हैं कि ये ऐसे गया, फिर ये हम्म, ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, वो चाहे वो ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, वो अपनी मर्जी है आपकी। ठीक हाउ है। डू यू स्टडी दैट कॉन्सेप्ट, राइट? स्प्रिंग में भी जाता तो रिपीट होना चाहिए, दैट्स ऑल, विद एन एम्पलीट्यूड, ठीक है सर, ठीक है। राइट? सो एनर्जी, एनी energy at any other point will be sum of potential and kinetic. Once we have a grip on that, I think this chapter finishes for good.
थोड़े से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे उसको रिवाइज करके। ठीक है जी, सी यू हम्म, देन, बाय।